मंत्री जी। माननीय, मैं इस सदन के समक्ष लोडेट कर दिया 1 घंटे पहले। हाँ, जल अधिनियम 1 घंटे नहीं 2 घंटे पहले जिसमें महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित है, लोडेट। अभी देखो आप, सदन में पारित करने के लिए जब स्पीकर बोलता है तो स्पीकर बोलता है। सदन में विचारार्थ पारित करने के लिए प्रस्तुत करता हूँ। विचारार्थ पारित करने के लिए प्रस्तुत, वही है, उसका अर्थ यही है जी। मैं कुछ कह सकता हूँ? कह दो, थोड़ा बोलो हल्का। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत संशोधन विधेयक द्वारा जो महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं, उससे न सिर्फ उद्योगों को गति बता दो ना एक बार, अपितु ये बदलाव पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी सहायक सिद्ध होंगे। ये इंटेलिजेंट मेंबर है ना गोगोई, इसने देख लिया तो आज समझ सबने देख लिया। औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, संचालन, आवश्यक अनुमतियां, उल्लंघन पर कार्रवाई आदि की प्रक्रिया को सरल और सहज बनाने के लिए इन बदलावों को किया जा रहा है। इसके साथ ही सामान्य गलतियों के लिए उद्यमों को जो कारावास की सजा दी जाती है, उसको पूरी तरीके से हटाने का प्रस्ताव इस विधेयक के अंतर्गत किया गया है। प्रस्तावित संशोधन पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए व्यापार की सुगमता, ईज ऑफ लिविंग बिजनेस की दिशा में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की कड़ी में से ही एक कड़ी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत के प्रावधानों में धारा 41 से लेकर धारा 45A तक, धारा 47 और धारा 48 में विभिन्न छोटी छोटी चीज़ों में दंड का प्रावधान किया गया है और उनका वर्णन किया गया है। अब नए संशोधनों में धारा 25 और 26 के प्रावधानों के उल्लंघन, जुर्माना या अतिरिक्त जुर्माना देने की विफलता को छोड़कर सभी प्रावधानों से जो कारावास देने का जो प्रावधान था, उसको समाप्त किया जा रहा है। अभी आज जो जल प्रदूषण निवारण अधिनियम विधेयक है, इसके जो समान विधेयक जो वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण विधेयक 1981 है, उसके प्रावधानों को पहले ही जन विश्वास बिल 2023 के अंतर्गत स्वीकृति सदन के द्वारा किया जा चुका है। चूँकि वर्तमान जो जल अधिनियम संशोधन विधेयक है, ये राज्यों के पास भी जल का विषय आता है और जल अधिनियम संविधान जो है, जल संशोधन विधेयक जो है, वो संविधान के अनुच्छेद 252 के अंतर्गत अधिनियमित किया गया था। इसलिए उस समय जन विश्वास विधेयक पर इस पर विचार नहीं किया गया था और इसलिए इसको अभी 2 राज्यों के द्वारा इसको समर्थन दिए जाने के बाद इस सदन के समक्ष रखा गया है। मुख्यतः 3 प्रमुख विषय मैं कहना चाहूँगा, उसके बाद माननीय सदस्यों के जो भी विचार, सुझाव और राय आएंगे उस पर भी मैं अंत में अपना स्पष्टीकरण देना चाहूँगा। पर 3 प्रमुख विषय इस अधिनियम के अंतर्गत संबोधित किए गए हैं। पहला, राज्य के जो बोर्डों में प्रमुख पदाधिकारियों की नियुक्ति है, उसको सुव्यवस्थित करना। अभी तक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के जो अध्यक्षों की नियुक्ति है, उनकी योग्यता, उनके तरीके को एक सुव्यवस्थित बनाने के लिए, एक समान बनाने के लिए इस संशोधन में धारा 4 के अंतर्गत जो है संशोधन किया गया है। धारा 4 के अंतर्गत जो संशोधन किया गया, जो अमेंडमेंट किया गया है, उस अमेंडमेंट से सभी राज्यों के अध्यक्षों की निष्पक्ष और पारदर्शी नियुक्ति सुनिश्चित की जा सकेगी और उनके लिए एक निश्चित अनिवार्य योग्यता, अनुभव और प्रक्रिया को भी प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन इस संशोधन के द्वारा किया गया है, वह मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में कहा है, ईज ऑफ लिविंग बिजनेस करना और जो अनावश्यक दंड के प्रावधान हैं, उनको समाप्त करने का प्रयास किया गया है। और इसलिए सेक्शन 25 और 26 को छोड़कर बाकी जितनी भी धाराएं जो अदालतों में अभियोजन लगा करके, प्रक्रिया चला करके जो एक तरीके से सजा देने के प्रावधान थे, उनको हटाने का प्रस्ताव किया गया है और अब उस पर जो जुर्माना है उसको लगाने के लिए एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की नियुक्ति की गई है
जुर्माने की विफलता जैसा मामले में भी कुछ प्रावधान किए गए हैं। और इस जो जुर्माने को जो लगाया गया, जो फाइन लगाया गया है, उसके लिए एक पर्यावरण कोष को बनाने का प्रावधान किया गया है। लेकिन अगर किसी को लगता है कि वो जुर्माना लगाया गया है, अगर वो ठीक नहीं है, तो फिर उसमें अपील का अधिकार भी एनजीटी के माध्यम से करने का प्रस्ताव किया गया है। एक सेल्फ रेगुलेशन सिस्टम को बनाने का प्रयास इस संशोधन के द्वारा किया गया है। तीसरा, ये जो इस समय जब हम किसी भी राज्य में जो उद्योग लगाने जाते हैं, तो कंसेंट टू एस्टैब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट का जो मैकेनिज्म है, हम जानते हैं कि अलग अलग राज्यों में उसके द्वारा तकलीफ दी जाती है और एक तरीके का भ्रष्टाचार किया जाता है। लेकिन वर्तमान में इसके जो कंसेंट टू एस्टैब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट का जो मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को सुव्यवस्थित करने का प्रयास किया गया है। केंद्र सरकार को किसी भी औद्योगिक इकाई की स्थापना से पहले पूर्व सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता से कुछ श्रेणियों के उद्योगों को छूट देने के लिए अधिसूचना जारी करने का अधिकार होगा, जिससे राज्यों को जो अपने जो ग्रीन इंडस्ट्री जो लगाते हैं, उनको कई तरह की प्रशासनिक जकड़नों से बचा जा सकेगा। और इससे कई बार केंद्र सरकार की अधिसूचना के बाद कुछ राज्यों में अलग से जो कंसेंट लेनी पड़ती है, वो जो दोहराव होता था, वो कम होगा और रेगुलेटरी बॉडीज या उनके बोझ भी कम होगा। दूसरा, केंद्र सरकार किसी भी औद्योगिक संयंत्र की स्थापना और संचालन के लिए किसी राज्य बोर्ड द्वारा सहमति देने पर इनकार करने या रद्द करने से संबंधित मामलों पर दिशा निर्देश निर्धारित करने के लिए अधिकृत होगी। और ये सभी प्रक्रियाओं में एक सिस्टम, सब में एक समान सिस्टम सब जगहों पे लागू होगा। और जो उद्योग ऑल इंडिया लेवल पे चलते हैं, उनमें लंबे समय से जो उनके द्वारा जो मांग की जा रही थी कि उनके राज्य की, एक राज्य में उनको अलग तकलीफ होती है, दूसरे राज्य में अलग तकलीफ होती है, उनके लिए एक समान रूप से मैकेनिज्म करेगा। ये आत्मनिर्भर भारत के लिए और ये देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैंने इस होने वाले जो संशोधन है, उनके प्रावधानों को सदन के समक्ष प्रस्तुत करा है। मैं चाहूँगा कि सदस्य इसका समर्थन दें और अपने विचार रखते समय अगर कोई स्पष्टीकरण होगा तो अंत में मैं उसको रखने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। मणिकम टेगोर जी। Sir, thank you for giving me the opportunity to speak on the discussion on the Water Prevention and Control Amendment Bill 2024. I stand here to raise my concerns regarding the bill and amend one of the very core environmental acts of this country, which is the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974. The intent of this government is to bring this bill is very clear: decriminalize and let go the violators that pollute the water resources of country. This is a bill against the children of our country. This is bill against the culture of India itself, where we worship the environment as God. This bill is against the federal nature of this country itself. Sir, it has not been long since the government passed the Jan Vishwas bill, which contained similar provisions that decriminalized violations of the act of governing air pollution. We know that Delhi, how air pollution is a bigger issue. I doubt that the government is proposing to do in the name of ease of doing business the same thing. I vehemently stand today to warn the union government that the opportunity cost of passing this bill is the access of our future generations of a pollution-free, disease-free life. When the recent laws being introduced and passed by the government, it is evident that the government has no respect for the environment of this country. Therefore, I may take this moment to remind this government of the Subhash Kumar versus State of Bihar case in 1991. The Supreme Court in this case has strongly ruled out that the right to pollution-free water and air is a fundamental right under Article 27. Subsequently, the right of the pollution-free environment was incorporated in the Constitution's right to life, and all the law courts within the Indian Union territory were bound to follow the same. I am surprised that the government has no regard for this verdict.
Sir, I'd like to bring out that that this Water and Prevention Control of Pollution Amendment Bill 2024 is just another attempt to align the 1974 Water Act with the current anarchist policies of the government. That is, to disarm the state governments, to bring everything under the central government's control, under the control of Delhi. Now the new bill is aimed at shifting the powers of the state governments to the central government regarding the constitution of the SPCBs. Let me explain that this power, in terms of appointment of the chairmen of SPCBs, terms and conditions of the service of SPCBs, chairman and appointment of adjudicating officers who will be now vested with the central government. The major issue of this shift is that central government, the elected central governments, will be losing its authority over critical decisions that impact the functionability of this bill itself. Further, the bill has been amended Section 27 of the Principal Act to insert provisions that give the union government an ultimate power to issue guidelines regarding matters relating to grants, refusal, or cancellation of consent by the any state board for the establishment of any industry, its operation, processes, and treatment and disposal systems. It is also mentioned in the bill that every state government should act accordingly to orders, guidelines issued by the central government. This is a clear move to overpower the decisions of the state governments. The proposed bill grants the central government the authority to exempt certain industry categories from the obligatory need to obtain consent to the discharging of industrial waste into the water bodies. This highlights concern that the current government, of its own interest, might enable influential industries in polluting water bodies, similar to the perceived empowerment of individuals like the Adani Group, who are accused of exploiting people and resources for personal gain. Further, granting certain industries exemptions for the central government to release industrial waste into water bodies raise growing environmental concerns. With minimal oversight and these exemptions, the unrestricted discharge of industrial waste poses a significant risk of water contamination in lakes, rivers, and groundwater. This would eventually render the water unsafe for the surrounding communities, pose threats to the nearby forest cover, and wildlife dependent on these water bodies. Sir, one of the major concerns of the bill poses is the omission of the imprisonment of repeated offenders under the Section 24, Section 25, or Section 27, which previously ranged from 2 to 7 years imprisonment. This removal raises concern that the effectiveness of the state-level deterrence against the industrial pollution and provides big leeway for repeated offenders. In the earlier draft of the Act, imprisonment of the repeated offenders served as stringent consequences for violating environmental laws, compelling industries to take compliance seriously. With the current absence of such stringent punishment, there is a risk of diminished accountability, allowing offenders to potentially evade significantly by merely paying substantial fines. I am surprised that the government has decriminalized serious offenders, such as failure to comply with such orders by a state board or courts on emergency measures in a case of pollution or steam or well. Also, offences such as failure to intimate of the occurrence of any incidents or any other unforeseen events and damages caused by any work or property belonging to the pollution control boards, which are grave in nature, have been replaced with penalties. It means that those who have money can get away with the consequences. In the name of building a spirit of ease of living and ease of doing business, the government is surrendering the shield against environment pollution. The state of objects and reasons of the bill states that I quote, that the cornerstone of the democratic governance lies in the government trusting its own people and institutions. But the decriminalization of serious offences in the bill suggests otherwise. That is, the government is trusting the country's environment with their business friends. We all know how strong Modi ji's friendship with the crony capitalists exists. The current government often highlights the Namami Gange initiative as one of its initial commitments.
with Prime Minister Modi expressing personal duty to serve Ma Ganga by aiming to clean the scarred river. Unfortunately, it appears that these efforts have fallen short, and the condition of Ganga remains cause of concern. Despite promises, Ganga stands as one of the world's polluted rivers, with approximately 80% of the pollutants originating from the untreated industrial and household effluents. According to the CPCBC, a mere 37 out of 222 monitoring sites among the Ganga boast water suitable for bathing. Is this how the depictive promises made to the citizens of the country work? It is noteworthy that despite consistent expressions of the concern by the Supreme Court and the Delhi High Court and the National Green Tribunal regarding the environmental issues in the national capital region, including the state of Yamuna River, air pollution and waste management, only one conviction under the Water Prevention and Control Act 1974 took place in 2017. The limited number of convictions suggests that the fear of criminal prosecution is not serving in a sufficient deterrent. Given the highlighted concerns in the draft bill, it appears that intended purpose of the amendment may not be fulfilled. But the need of the offer is to evaluate an existing structure and institutionalize the capabilities of CPCBs rather than diluting the battle against pollution itself. Also, the government should note that merely increasing the centre's power with CPCBs is not the right path and will not render effective without addressing the basic problem. That is, without enhancing its institutional capacity and components to exercise these powers. No amendments in the bill will prove effective. Therefore, I end with my speech suggesting that the government focus on addressing the shortcomings in the existing regulatory institutions instead of constantly coming up with a new hollow laws that detail the entire governance structure. Thank you, sir. श्री शंकर लालवानी जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह जल प्रदूषण के संबंध में ये विधेयक लाया गया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार हर क्षेत्र में प्रदूषण कम हुआ है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो वायु का क्षेत्र हो, पानी हो, हर क्षेत्र में प्रदूषण कम हुआ है। हमने देखा स्वच्छता अभियान के माध्यम से किस प्रकार वायु प्रदूषण कम हुआ है और पूरे स्वच्छता अभियान में एयर इंडेक्स क्वालिटी भी बेहतर हुई है। इंदौर में इसके कारण एयर इंडेक्स क्वालिटी में इंदौर आज नंबर 1 है। जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्रीन एनर्जी को लेकर काम किया है, उससे पूरे देश में एयर पॉल्यूशन कम होने जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहन की संख्या जिस प्रकार बढ़ रही है, हमारी एयर इंडेक्स क्वालिटी भी बेहतर होती जा रही है। हम देखें कि रेलवे में जिस प्रकार से कोयले का इंजन बंद हुआ है और रेलवे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन पे होने जा रहा है, उससे पोल्यूशन कम हुआ है। अब तो रेलवे सोलर एनर्जी पे आ गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या से आने के बाद प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लागू की, जिसमें देश में सोलर एनर्जी में नई क्रांति आई है। हमारे इंदौर में भी इस अभियान में तेजी आई है। माननीय सभापति महोदय, यह जो संशोधन विधेयक माननीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी लाए हैं, उसी क्रम में जिसमें माननीय मोदी सरकार कई अंग्रेजों के ज़मानों के कानून ख़त्म किए हैं, समाप्त किए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरह उद्योगों की परेशानी किस प्रकार से कम हो, ये सरकार का मूल मंत्र है। माननीय मंत्री जी ने अभी जैसा बताया कि सामान्य गलती पर भी पर्यावरण और मानव को नुकसान नहीं हो, ऐसी गलती को भी उद्योगपतियों को पहले जेल भेजा जाता था और उनको प्रताड़ित किया जाता था, इंडस्ट्री बंद की जाती थी। लेकिन इस विधेयक में जो प्रावधान लाया गया है, इसमें दंड का प्रावधान लाया गया है, जो कि उद्योगों के लिए बहुत ही हितकारी है और उद्योग हमेशा ये चाहते थे कि इस प्रकार का प्रावधान लाया जाए। अगर दंड प्रावधान के बाद भी अगर उद्योगों को असहमति है तो अपील के लिए एनजीटी में वो जा सकते हैं। केंद्र सरकार इंडस्ट्री के कुछ श्रेणियों को धारा 25 में छूट भी दे सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट इस बारे में राज्यों को एडवाइजरी भी जारी करेगी और जिस प्रकार माननीय मंत्री जी ने कहा है कि राज्य के पोल्यूशन बोर्ड के अध्यक्षों की नियुक्ति की भी गाइडलाइन यहाँ से जारी होगी और राज्य के पोल्यूशन बोर्ड किस प्रकार चले, उस प्रकार से भी यहाँ से गाइडलाइन जारी की जाएगी।
इसमें एक बात और अच्छी की गई है, जो दंड आएगा वो दंड पर्यावरण संरक्षण के उपयोग में ही लाया जाएगा, इसलिए माननीय मंत्री जी को बधाई है और मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। Honorable members, DM Kadir Anand ji. Thank you, Speaker Sir, for giving me this opportunity to speak on the Water Prevention and Control Pollution Amendment Bill 2024. Sir, this bill, though it has brought in consistence with the air pollution and water pollution, but the nomenclatures of the bill, the inputs of the bill, when you read on the fine lines, it really is a draconian law. So initially, let me start with, I know that the bill is now to apply for Himachal Pradesh, Rajasthan and the Union Territories. But I know for sure that this bill is going to be amended or expanded to the other states in India also. I'll go by class, sir. So first is about the concern for exemption of the industries. So the bill specifies that the central government, in consultation with the Central Pollution Control Board, may accept certain categories of industrial plants from obtaining consents. Sir, when in any state, whenever they have to start an industry, they will first approach the State Pollution Control Board. The State Pollution Control Board will look at the possibilities and the feasibilities and the water pollution measures, then they will give the consent. Now, they say that the Central Pollution Control Board simply can issue an order. If at all the Government of India proposes to issue a pollution certificate to an industry which is happening in a state or coming into a state, and that causes any malpractices or that causes any pollution discomforts or water pollution, who is answerable? The state is answerable. The public will only walk into the state premises, the state government or the panchayat or whatever it is, the state authorities, and they will be questioned. But the central government will keep quiet and they will not interfere into kind of things. So this is a draconian law that says that the central government can issue any kind of a consent to any officers, any industries without the concern of the State Pollution Control Board. This is a very, very bad move by this in this act. Secondly, sir, the bill also adds the government may issue guidelines for the grant of refusal and cancellation of the consent granted by the State Pollution Control Board. If at all a State Pollution Control Board has already given a consent to an industry, that consent can also be cancelled by the Central Pollution Control Board. What is this, sir? Sir, where are we going up? So entire India, the entire government, the government of the central government is now only acting to crush the state autonomy. So any pollution control concerns given by the state after acting upon all the rules and regulations can be cancelled by the Central Pollution Control Board. This is a draconian law. And the third one, the chairman of the board. Sir, the State Pollution Control Board is an autonomous body that is happening or that is existing by the state authorities. Now the Central Pollution Control Board will come to the state and say that this is how you have to attempt and appoint a chairman of the board. What is this, sir? So the governor will come. He will say who is going to be the vice chancellor or chancellor of a university. Then the next person from the central government will come. He will say that this is how you have to be. And now, even for the Pollution Control Board chairman also, the central government is going to come and they are going to tell that this is how you have to appoint the chairman of the State Pollution Control Board. So, this is another draconian law. They are taking away all the rights of the states. And another point is that the State Pollution Control Board will issue directions immediately restraining to activity which is leading to the discharge of polluting materials in the water body. Now, whenever there is a mishap in the State Pollution Control Board will impose fine or penalty or even imprisonment depending on the crime situation, depending on the happenings, whichever the incident. Now the Central Pollution Control Board walks into because of the act, they walk into the state saying that no, hereafter you will not impose any kind of an imprisonment. You will not do anything. All you can do is only impose a fine
of rupees 10,000 rupees or to 15 lakh rupees. So they are now taking away the punishment category also. And the next point is the penalty of the offences. Under the old act, an offence which is a punishment not explicitly specified by the punishable with an imprisonment term up to 3 months or a fine up to 10,000 rupees or both. Sir, whenever there is whenever something happens in the state that is against the State Pollution Control Board, they will impose a fine of 10,000 rupees or both or whatever it is. Now again the Central Pollution Control Board is walking into the shoes of the State Pollution Control Board and they are saying that no. We will only prescribe what is going to be the provision. You cannot arrest anyone even if there is a great calamity or whatever has happened. Another thing, sir, this bill allows the central government to appoint adjudication officer to determine the penalty of the act. Okay? They are going to appoint adjudication officers to examine what has happened. The officers must be at the level of a joint secretary to the central government or the secretary to the state or the government. Whatever is the role of the state government in appointment of the adjudication officer. The union government big brother attitude is unwarranted. They step in again and saying that who is going to be the adjudication officer? So now tell me, sir, I am asking this August House, a state is having an autonomous activity. The state is autonomous, which is taking care of their own business. But the central is walking into each and every parameter, each and every instances of a state. They are infringing into the autonomy. The entire constitution which is happening is now demoralized. Sir, the cognizance of the offences, this is very interesting part of this act. Sir, whenever any fault or whenever malpractice is happening in occurrence in the State Pollution Control Board, earlier the officers who were all connected with the crime will be punished. Now, the new act, which is telling this August House, they are saying that now the Central Pollution Control Board is telling the state or this August House saying that if at all there is a crime, if at all there is a fault, it has happened in that Pollution Control Board in granting license or whatever it is, the action will be taken only on the chairman of the board, where 1 month of his basic salary will be given. End of the crime. So there is no punishment. Even 10 officers who have jointly done the crime also, still the punishment is going to be the basic salary. Now, I am only asking this August House, sir. Sir, each and every state, running a state is difficult. Each and every state, they are going here and there to bring in investments, bring in funds and all the things. But the central is infringing into all the things. Sir, they introduced GST, took away all our money. They introduced NEET, took away all our autonomy in giving medical seats. Dam Safety Bill, National Education Policy, Citizenship Amendment Bill, 3 Farm Bill, Multi-Cooperative Society Bill, Criminal Procedure Identification, Electricity Amendment, Delhi Municipality Bill, Indian Medicine Bill, National Medical Commission Bill, Airport Authority Bill, Major Port Authority Bill, Motor Vehicle Bill also. So they are taking away all the rights of the state. Sir, I'll tell you, I'm going to conclude very shortly, sir. Please. Sir, our Chief Minister from Tamil Nadu, he is traveling here and there to invite investors to state. I'm talking generally for other states also. Each and every Chief Minister of a state, the state cabinet runs here and there to invite people to come and invest, to start up industries. But if this kind of a bigger brother attitude is there, where they said you can do this, you cannot do this without the state autonomy, then how will the investors walk into the states? It is not possible. Therefore, I want to this August House to recall this bill and make amendments such a way that the state authority is not questioned. Sir, I will just only one word I want to complete. In Tamil they used to say, my chief minister always says, மக்களுக்கு எல்லா நன்மைகளும் செய்வது மாநில அரசுகள் தான். மாநில அரசிடம் இருந்துதான் அன்றாட தேவைகளையும் மக்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள். ஆனால் அதற்கு இந்த மத்திய அரசு முட்டுக்கட்டை போடுகிறது. One final word, sir. If this kind of a big brother attitude is going to continue, then you will lose all the states. Today you may be a big brother, you are very powerful, but tomorrow
you may need to sit here. We will sit there. You will all again face the same opinion. Sir, I will finally conclude with 4 lines in Tamil. 4 lines in Tamil. எய்பவர்களுக்கே காலம் என்று எண்ணி விடாதே. போய் எத்தனை நாள் கை கொடுக்கும் மறந்து விடாதே. ஒரு நாள் இந்த நிலைமை மாறுதல் உண்டு. அந்த மாறுதலை செய்வதற்கு தேர்தல் உண்டு. நன்றி, வணக்கம். Honorable member, please sit down. Sit down. Thank you, sir. Okay. Honorable member, Sri N.K. Premendra. Thank you very much, Mr. Chairman, sir, for giving me this chance to speak in out of priority on my request. Sir, I strongly and vehemently oppose this bill. This is a draconian legislation as far as the environmental protection is concerned. So I fully support my learned brother. Just now we have spoke about it. And it is being introduced in the House and it is being taken for discussion in a very light manner. Sir, I have gone through the debates of the Rajya Sabha also. Unfortunately, it is missing. See, I would like to know from the Honorable Minister regarding this, what is the intent of the bill? In the name of ease of doing business and in the name of ease of living, you are taking away the entire federal principles of the country, the Constitution, and also the environmental protection, ecological protection laws are being violated. And that is the reason by which I strongly oppose. This is a very simple way. It is being introduced and its impact and its consequences will be very high and the ramifications will be very high. Sir, if you go through the history, why this law is enacted, if you go through the history, it is very clear that the United Nations Conference on the Human Environment held in June 1972, and on the basis of that convention, that conference, 3 acts were pronounced. Sorry, 3 acts were enacted. The Water Prevention and Control of Pollution Act of 1974, the Air Pollution Control Act 1981 and the Environment Protection Act of 1986. Sir, these are the landmark legislation the Parliament has made subsequent to independence and subsequent to this international conference. And also how this bill is coming to the House on the basis of the resolutions passed by 2 legislative assemblies, Rajasthan and the Himachal Pradesh. They have passed the resolutions. I would like to know from the Honorable Minister when these resolutions are passed. Normally, this will come in the statement of objects and reasons. And why this bill, when the resolutions were passed by the Himachal Pradesh and the Rajasthan State Assembly, I would like to know, because politically I would like to know, because it is not in the file, not in the record, not in the statement of objects and reasons also. And they are relinquishing their rights. They are relinquished their right to have, they are relinquished their powers to control, to have the water control and prevention of water pollution. Sir, in 2 cases I am opposing it is because number 1 is, the first one is the principles of federalism is violated, number 1. And number 2, the environmental protection laws are being violated. Sir, now the whole world is sensitive to the ecological and environmental protection. Strong demand is coming from the public to have stringent environment laws so as to protect the nature and to meet the requirements in future. And we are all, and all the Honorable Minister is also very vocal, vehemently supporting the environmental, ecological protection, and he has attended the UNCCC conference also. After that also, we have an online 3 discussion in which also he was very strong advocate for the environmental protection. We have never expected such a law from the Honorable Minister like Bhupendra Yadav ji. Sir, the global warming and the climate change is the hot topic for discussion in the international forums. UN conference on climate changes, all nations including India took pledge to mitigate the carbon emission. By 2070, we have decided to have the 0 carbon emission, for which we are planning our programs to achieve the target. And even the Honorable Prime Minister made a very specific statement in the UNCC conference, in which also we are committed to have 0 carbon emission by 2070, and the programs are being planned. Sir, carbon emission can be abated by mitigating the pollution, both water pollution as well as air pollution. Water pollution as well as air pollution, both are having its own impact on the carbon emission, no doubt about it. But it is surprising to note that the government is coming with a legislation
to dilute the law relating to the prevention and control of water pollution just to satisfy the interest of the industry in the name of ease of doing business. Yes. See, the entire legislation, if you go through, during the time of NTA government, during the last 10 years, almost all the legislations are in the name of ease of doing business. So the Environment Protection Act of 1986, Forest Conservation Act, Wildlife Protection Act, the Water Act, I've already said that these are all the landmark legislation in independent India. We are able to protect the existing forest coverage only because of the stringent provisions of the Forest Conservation Act. Similarly, the Environment Protection Act, the Wildlife Protection Act. Yes. Sir, please give me a little bit time. Suppose if you think that if there was no Forest Conservation Act, if there was no environment protection, what would be the status of the Indian forest now? Wildlife protection, those stringent and strict provisions are there. That is the only reason by which the forest coverage area is protected to an extent, and also the wildlife protection is still there. Otherwise, the situation would have been different. So, but here in this bill, you are decriminalizing the offenses coming under the Water Act. So, the dilution of this act is in the name of ease of doing business and ease of living also. So if we critically examine the 10 years of BJP government in office, the ease of doing business is done at the cost of environment and at the cost of the labor. Yes. It is quite incidental. Both ministries are being held by the Honorable Minister. All these ease of doing business, all are at the cost of the labor and at the cost of the environmental loss. Sir, if you examine here also the same thing is happening. So I would like to know from the Honorable Minister whether you are interested in protecting the labor or capital, or the environment or the business community or the industry community. Because why this legislation is coming for, only one answer is to safeguard the industry. That means of doing the ease of doing business. Sir, coming to the bill provision by provision. Sir, by virtue of the various provisions in the amendment bill, all penal provisions have been freed from imprisonment and will be replaced by penalty, except section 25 and section 26. That means total decriminalization of the penal provisions of the existing bill. Sir, what is the need of imprisonment? You are well aware, as a learned lawyer also, you are well aware because it is a deterrent punishment. The deterrent punishment, because imprisonment is a strong, stringent punishment, so that the persons or we will be deterred from doing a crime against the ecology, environment, and against the humanity. That is the reason by which the imprisonment is taken away, except in the case of section 25 and section 26. So, two, the central government shall be empowered to exempt certain categories of industries from the requirement of prior consent before establishment of an industrial unit. Absolute discretion with the central government. That is why my learned friend is just saying about that the decriminalization or not requirement of getting prior permission before starting an industry. Permission has to be obtained from the State Pollution Control Board. That is not required. The central government, one second. The central government is empowered to exempt the requirement of getting prior permission so as to start an industry in my district. Kollam means, what does it mean, sir? This is a centralization of power. Sir, if in our district, you are also belong to my district. In my district, if an industry has to be started, and if that industry can be exempted from getting the prior permission from the concerned authority, that can be decided from Delhi. What does it mean, sir? So what is the intent of the bill? Let the Honorable Minister explain. What is the intent of the bill? To whom you are to protect? Which industry you have to protect? So that is why I am saying, using the word, it is draconian. Sir, 1 second. And 3, for the grant of refusal or cancellation of consent by the state board to establish or operate any industrial unit, central government is authorized to issue the guidelines. That is also which has already been explained. And also an order of adjudicating officers. So adjudicating officers are being appointed by the central government. Adjudicating officer is a rank which is just below the rank of a joint secretary. And such an officer is being appointed by the central government. And the number of adjudicating officers, there is no limit. The bill is also very vague. It can be interpreted in any way. How many adjudicating officers? And kindly see, an appeal from the adjudicating officer will lie to the National Green Tribunal.
National Green, see, an ordinary common person, whether he can approach the National Green Tribunal, how much Please cost conclude. and expense. Sir, I will be concluding. So, how much expense? These are all the issues. And so, I am concluding, sir. So, the waterborne diseases in India is increasing day by day. Sir, not less than 4 crore Indians are suffering from the disease, leading to nearly 4 lakh fatalities every year. Water pollution is the main reason for this. So, this is the right time to which we have to protect the environment. We have to make the environment laws more strict and stringent so as to protect the environment and ecology and also the pure water. That, sir, the right to safe water is a fundamental right. The right to life envisaged in Article 21 of the Constitution. But at that time, when the time is requiring for having stringent legislation for the environmental protection and prevent the water pollution, now the government and this parliament is passing a law just to dilute the environmental law, water pollution law, and to decriminalize it, thereby the industries being satisfied. Therefore, I strongly oppose and I urge upon the government and the minister, kindly send this bill to the parliamentary standing committee to have a close scrutiny of the bill. With these words, I conclude. Thank you very much, sir. Honorable Member Srimati Geeta Vishwanath. Sir, After. I convey my thanks to my leader, Sri Midhun Reddy Garu, for giving me this opportunity. Sir, Water Prevention and Control of Pollution Amendment Bill 2024. Sir, I support. It is very important bill because all people, not only people, farmers and animals also facing due to water contamination. Sir, many honorable members discussed many issues. I would like to make some suggestions, sir. Sir, first of all, regarding first and foremost, we must establish strict enforcement mechanism to hold industries accountable for their actions. Sir, it is essential to implement stringent penalties for those found violating environmental standards, including fines, suspension of operations, and even criminal charges for repeat offenders. Furthermore, we must empower regulatory bodies with the necessary resources and authority of monitor and enforcement compliance effectively. Sir, moreover, promoting pollution prevention technologies is a paramount in our efforts to minimize the discharge of pollutions into water bodies. By encouraging industries to adopt environmentally friendly practices and technologies, we can significantly reduce the impact of pollution on our water resources. This could be achieved through incentives such as tax breaks and subsidies for companies investing for sustainable practices. Sir, we must prioritize the protection of our citizens from contaminated water, utilizing penalties collected under this bill to fund initiatives aimed to dispolluting water bodies and addressing water-borne diseases is essential. Allocating funds on the Environmental Protection Fund for this purpose will ensure the resources are allocated effectively to tackle the critical issues, sir. Sir, integrating with existing environmental program is crucial for maximizing our impact and leveraging available resources. By aligning the initiatives like the National Clean Air Program, NCAP, we can effectively coordinate our efforts and ensure a unified approach towards environmental protection. Collaboration between different government departments, agencies, and stakeholders is key to success of our endeavors. Sir, lastly, establishing robust monitoring and reporting requirements is essential for tackling progress and promoting transparency. Sir, mandating regulator monitoring and reporting of water quality parameters will enable us to measure the effectiveness of our pollution reducing efforts. Furthermore, establishing mechanism for public access to water quality data and information will foster accountability and trust among the public. Thank you so much, sir. Thank you. Honorable Member Srimati Pratibha Mandal.
Sir, on behalf of my party, All India Trinamool Congress, I strongly oppose this draconian bill, the Water Prevention and Control of Pollution Amendment Bill 2024. Sir, the country has seen the quality of its water bodies drastically decline due to unfettered urbanization and industrialization and the resulting discharge of waste and toxic pollutants over the past decades. Many articles and research papers published over many years showing innumerable water bodies across India toxic and simply poisonous. So Ganga, Jamuna, Godavari, Ghagar, Gomati, these are the 5 most polluted rivers in India. So under Ganga Rejuvenation Program, despite spending over rupees 32,000 crores since 2014, the latest revelation by the Jal Shakti Ministry holds that 71% of the monitoring stations in Ganga have reported very high levels of fecal coliform early this year. The National Green Tribunal found that untreated wastewater sewage continues to be discharged in the holy river Ganga unabated. So back in 2018, the Composite Water Management Index released by the then Minister for Water Resources, Mr. Nitin Gadkari ji. He stated that India is suffering from, quote, the worst water crisis, unquote, in its history, with about 60 crore people facing high to extreme water stress and about 2 lakh people dying every year due to inadequate access to safe water, and the situation has only gotten worse over the years. Sir, in 1988, some amendments were made to bring in stringent penalties like an increase in fines and imprisonment under Section 41 of the Water Act. But the amendment's proposal to reduce the burden of compliance decriminalize environmental violations by removing imprisonment as a penalty or punishment. The rationale being, quote, to weed out the fear of imprisonment for simple infractions. So my question to the Honorable Minister is, what constitutes a simple infraction? The bill says simple infringement is when injury to human is not caused. But how do you determine injury and over what period of time? There have been cases of children being born with disabilities due to their proximity to polluted water bodies, as well as increasing cases of cancer which manifest after months and years of a water body being polluted. This is a question of national public health, and the lives of Indians are at risk. So please help me to understand, Honorable Minister, how do you determine a simple infraction and over what period of time when it comes to polluting such a valuable resources as water, without which life itself is impossible? My second question to the Honorable Minister is, will the proposed increase in fines increase the cost of non-compliance over the cost of compliance? The upper limit for the penalty specified in the amendments is not enough to deter polluters with enormous resources from polluting. My request to the Honorable Minister, it should be less than 10 lakhs, which may extend to 50 lakhs. It is also unclear how the penalties will be calculated, as the revisions have not established any formula or guidelines or guidance. While higher penalties are definitely required, penalties alone will not be sufficient, and these amendments, if passed, will bring about a situation where polluters will continue to pollute and simply pay the fines instead of investing in proper waste management and waste treatment facilities. And that is why it is important that imprisonment must be a possibility, at least extreme cases where damages done to any water body are irreversible
and there are clear cases of people in the surrounding areas developing serious illnesses due to consumption of water from that water body. So the amendment also proposed creating a water pollution remediation fund from the penalties collected from the violators. While a part of the funds can be used for the purpose of compensation of affected parties. Sir, how do you determine affected parties in a case irreversible damages are done to a water body, rendering it unfit for consumption? Speaking very nicely. Hello. So because once polluted irreversibly, the toxic substances filter into groundwater as well as the soil, penetrating all connected ecosystems. So affected parties cannot just be people who suffer the consequences immediately, but also future generation who will be impacted in the decades to follow. Sir, therefore we need laws and amendments that will oblige companies to mandatorily treat their waste, and if they don't, they shall not only pay fines but also go to prison in extreme cases. Please conclude. Sir, when it comes to funds from penalties collected, they shall be dedicated to not only compensate all affected parties adequately, but also towards building new infrastructure and technology that can restore the quality of water in our lakes, rivers as well as groundwater. Yes. Sir, I would like to conclude by reminding this government that uncontrolled growth is never a good thing. Yes. In the human body, for example, uncontrolled growth is synonymous of cancer. Yes. And in the same way, the pursuit of unchecked industrialization and economic growth, whatever price to pay, is cancerous for the future of our country. The present government is concerned only with short-term gains, and passing amendment like this will only make it easier for industries to pollute our precious water bodies, endanger more and more species of flora and fauna, and risk the health of crores of Indians. Thank you. We are sitting on a public health time bomb, and the current government is leading us into a very dark and worrisome future by multiplying and adding to the already existing problems instead of solving them. And what our fellow opposite members said regarding the power to issue guidelines, I can only say that the intention of the government is to centralize the power by snatching the power from the state government, Yes. which is not a good sign for the democracy. So, Thank you. sir, I once again must say that Shringa we, Parani. the Trinamool Congress, is strongly opposing this draconian bill. Thank you, sir. माननीय सभापति महोदय, जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण संशोधन वाला विधेयक 2024 में मेरी पार्टी शिवसेना के तरफ से मैं समर्थन में खड़ा हूँ। अध्यक्ष जी, आज भूजल और अगर नदियाँ, नाया, कुएं, समुद्र तक का प्रदूषण अगर देखा जाए जल का, तो ये पूरी गंभीरता से ये समस्या है। ये समस्या केवल एक राज्य की नहीं है, ये समस्या पूरे देश की है। माननीय सभापति महोदय, भारत में व्यापक रूप से फैला हुआ जल प्रदूषण एक कठिन चुनौती है। देश में 1,55,813 बस्तियां, गांव में पानी की गुणवत्ता खराब है, जिससे आबादी के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर रहा है। लेटेस्ट अध्ययन के अनुसार भारत में प्रदूषण के कारण 2019 में 2.3 मिलियन से अधिक लोग की असामयिक मृत्यु हुई है। आज नगरों और महानगरों का जोखिम विकास हो रहा है। कोई भी आवासीय परियोजना या औद्योगिक परियोजना सीवरेज उपचार संयंत्र के बिना पूरी नहीं हो रही है, लेकिन इसके बावजूद नदी और जलाशयों में प्रदूषण कम नहीं हो रहा है। इसका
कारण है कि देश में लगभग 70% सीवरेज उपचार संयंत्र एसटीपी निष्क्रिय। माननीय सभापति महोदय, केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा सीवरेज उपचार संयंत्रों का निरीक्षण नहीं किया जाता है। कई बार कई महानगरों इसके ऊपर रोक या थाम लगाती है या नियंत्रण करती है, लेकिन कई ऐसी संस्थाएं उस पर ज़्यादा कर ध्यान नहीं देती। माननीय सभापति महोदय, इसमें हाउसिंग सोसाइटी, उद्योग, होटल, सरकारी कॉलोनियाँ, ये कई सारी ऐसी बड़ी बस्तियाँ होती है, उसमें ज़्यादा कर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कार्यरत नहीं होता। माननीय सभापति महोदय, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करना एक महंगा मामला है और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट इसका लगभग लागत कई ज़्यादा होने के कारण इसमें बिजली की आपूर्ति, जनरेटर सेट स्थापन करना, कर्मचारियों की नियुक्ति करना, इसमें प्रावधान होता है, लेकिन कई सारे जितने सोसाइटी इमारतें ये काम नहीं करती। इसका रखरखाव के लिए भी ज़्यादा लागत लगती है। माननीय सभापति महोदय, भारत में 11,000 से अधिक एसटीपी चालू है, लेकिन उसमें अधिकतम सीवरेज उपचार करने वाली क्षमता पूरी तरह से नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2019 और 2021 के लिए 1920 स्थानों पर 603 नदियों के जल गुणवत्ता का डेटा विश्लेषण के आधार पर सीबी ने वर्ष 2022 में जैविक प्रदूषण के संकेत यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के आधार पर देश में 30 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में 279 नदियों पर 311 प्रदूषित नदी खंडों की पहचान की थी। ये खंडों पर जल प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। आशा है कि संशोधन के लिए इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। माननीय सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त जल प्रदूषण के कई कारण हैं, जैसे कि खेतों में पानी छोड़ना, छोटे और नियंत्रित उद्योगों से आने वाले पानी को सीधा नदी या नाले में छोड़ना। आज के समय में ये हालत गंभीर है। देश में कोई भी ऐसा जल स्रोत नहीं है जो प्रदूषित नहीं है, और हकीकत में ये है कि देश के 80% से ज़्यादा जल स्रोत बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है। इसमें भी वो जल स्रोत ज़्यादा प्रदूषित है जिसके आसपास बड़ी संख्या में आबादी है। जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण पानी की क्वालिटी में गिरावट है। इसके सेवन से कई तरह से बीमारियां होती है। देश में खासकर ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य के स्तर का बड़ा कारण जल प्रदूषण है। दूषित पानी की वजह से कॉलेरा, टीबी, कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है। भारत में पेट के विकारों से पीड़ित 80% मरीज प्रदूषण पानी में से होती है। महोदय, देश में हर साल साफ पानी न मिलने की वजह से 2 लाख लोगों की मौत होती है। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री की एक महत्वाकांक्षी योजना है हर घर जल जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में पानी देने की सुविधा है। तो माननीय सभापति महोदय, लेकिन अगर जल शुद्ध नहीं होगा, हर घर जल कैसे पहुंच सकता है? ये भी बात बड़ी कठिनाई है। केवल जल का प्रदूषण नहीं, जैसे कि ज़्यादा बारिश होने से तालाबों में, बड़े नालों में मिट्टी जाती है, उसमें भी प्रदूषण बढ़ जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय सभापति महोदय, इस पर ज़्यादा कर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये देश के लोगों का हेल्थ अगर सुधारना हो तो शुद्ध पानी देने की आवश्यकता है। माननीय
सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जब बिल रखते हुए कहा कि प्रदूषण बोर्ड की नियुक्ति पर माननीय मंत्री जी आपने कहा है, ज़्यादातर हर राज्यों में जो ये नियुक्ति होती है ये राजनीतिक तौर पर उसकी नियुक्ति करते। इसमें जो जिसको समझ है, जो उसका जानकार है, उसकी नियुक्ति होनी आवश्यक है और ये मामले तात्काल कार्रवाई होने की आवश्यकता है। जहाँ नदी, मेरे महाराष्ट्र में तो जितनी नदियाँ है वो तो पूरी तरह से खराब हुए, केमिकल का पानी ज़्यादा करके औद्योगिक क्षेत्र का केमिकल का पानी नदी में जाता है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, जैसे कि संत ज्ञानेश्वर की आलंदी, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज की देव, ये पूरी तरह से दूषित हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा करके इस पर ध्यान दिया तो लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा। इसी बात पर मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। Thank you. Honorable Member Sri Sunil Kumar ji. धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 पर बोलने का अवसर प्रदान किया। जल प्रदूषण के नियंत्रण और रोकथाम तथा देश में पानी की उच्च गुणवत्ता बनाए रखने हेतु इसे वर्ष 1974 में अधिनियमित किया गया था। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकरण अधिनियम कुछ औद्योगिक गतिविधियों के व्यक्तियों द्वारा पानी की खपत पर उपकर लगाने के लिए 1977 में अधिनियम किया गया था। यह उपकर जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत जल प्रदूषण के नियंत्रण और हस्तक्षेप के लिए गठित केंद्रीय बोर्ड के संसाधनों और राज्य सरकार के विकास के दृष्टि से एक जगह किया गया था। महोदय, 3 दिसंबर 2019 को बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी द्वारा मेरे लोकसभा क्षेत्र वाल्मीकि नगर के चंपापुर गांव से ही जल जीवन हरियाली योजना की शुरुआत की गई थी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा तालाब और नदी का निरीक्षण भी किया गया था। यह भी जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के बहुत कारगर साबित हुआ। जल बचाना, जल को प्रदूषण से मुक्त करना, जल का नियंत्रण और बंटवारा हर देशवासियों के लिए लक्ष्य होना चाहिए। जल प्रदूषण निवारण, नियंत्रण और नवीनीकरण द्वारा राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में नदियों और कुओं की स्वच्छता को बढ़ावा देना भी है। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एक फील्ड संगठन का काम करता है तथा मंत्रालय को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के उपबंधों के बारे में तकनीकी सेवाएं प्रदान करता है। महोदय, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण संशोधन बिल 2024 को 5 फरवरी 2024 को राज्यसभा में पेश किया गया। बिल कई उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से हटाता है और इसके बदले जुर्माना लगाता है। यह शुरुआत में हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अन्य राज्य अपने यहाँ इसे लागू करने के लिए प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। मुख्य उद्देश्य यह है कि उद्योग स्थापित करने के लिए सहमति में छूट। राज्य बोर्ड के अध्यक्ष एक्ट के तहत SPCB के अध्यक्ष को राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाता है। बिल में कहा गया है कि केंद्र सरकार अध्यक्ष के नामांकन के तरीके और सेवा के शर्तों को निर्धारित करेगी। प्रदूषित पदार्थ का बहना एक्ट के तहत SPCB ऐसी किसी भी गतिविधि को तुरंत रोकने के लिए निर्देश जारी कर सकता है जिससे जलाशयों में हानिकारक और प्रदूषणकारी पदार्थ बहता हो। अन्य अपराधों पर दंड एक्ट के तहत ऐसा अपराध जिसके लिए सजा स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं हो, 3 महीने तक की कैद या 10,000 रुपये तक के जुर्माने, ये दोनों दंडनीय है। दंड निर्धारित करने वाले अधिकारी केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव या राज्य सरकार के सचिव स्तर तक होना चाहिए। अपराधों का संज्ञान अगर CPCB या SPCB ने कोई शिकायत की है या बोर्ड को नोटिस देकर किसी व्यक्ति ने शिकायत की तो अदालत अपराध को संज्ञान ले सकती है। सरकारी विभागों द्वारा अपराध एक्ट के तहत सरकारी विभाग द्वारा किए गए अपराधों के लिए उस विभाग के प्रमुख को दोषी माना जाएगा, बशर्ते कि वह साबित करे कि इस तरह के उल्लंघन से बचने के लिए सम्यक किया गया था। माननीय, उपरोक्त तथ्यों का महत्व, दूरगामी परिणाम और देश के भविष्य को देखते हुए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि जल से ही हरियाली है और हरियाली है तो जीवन है। अतः मैं इसी बात के साथ मैं अपने पार्टी की ओर से इस बिल का समर्थन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Honorable Member Sri Anubhav Mohanty ji. Anubhav Mohanty ji.
Jai Jagannath again. Jai Jagannath. Sir, today I am standing here on behalf of my party, the Biju Janata Dal, to speak on the Water Prevention and Control of Pollution Amendment Bill 2024. Sir, it has come after 50 long years, this amendment, after long 50 years, and I welcome it on behalf of my party. But at the same time, I have few suggestions to be made here through you to the Honourable Minister. सर मैं पहला स्पीकर ज़रूर हूँ बट मेरी पार्टी में दूसरी स्पीकर भी मेरे बात बोलेंगे तो मैं ज़्यादा वक्त लूँगा नहीं. I'll just in brief point out some points and recommendation suggestions you can say. Sir, a recent RTI reply revealed that no penalties have been collected under the Water Act for 2 years from 2020 to 2022 in Kerala. This correlates with National Crime Reports Bureau data which shows that no cases have been lodged under the Water Act over the past 2 years in the state. This is really surprising, sir, as this means that no violations of the Water Act have been reported over 2 years. And this raises concern about the state of enforcement and monitoring of the pollution control boards in the country. So the Environment Relief Fund under the Public Liability Insurance Act 1991 has a corpus of rupees 810 crore lying unutilized. Similarly, rupees 410 crore collected as Goa Iron Ore Permanent Fund is also untouched. Surprising, sir, it is clear that what is needed is not new funds but a mechanism to ensure proper utilization of the collected funds. Hence, crediting of penalties to EPF by this bill, sir, what you have brought as per the amendments, crediting of penalties to EPF is a step in the right direction. However, efforts must be made, sir, to ensure funds are efficiently utilized. A 3-tier model can be used to access the penalty amount, which considers the history of violation, unlawful gains from the act of pollution, and pollution cleanup cost for calculating the penalty. Thus, the proposed penalty has components of environmental compensation and punitive deterrence in addition to statutory penalties, sir, which are prescribed by the law. Sir, by the law, what I have understood is, sir, certain mistakes, certain wrongs are done knowingly and certain unknowingly. Perhaps Honourable Minister wants to convey us, or through this amendment wants to bring a change that any person who is unknowingly doing any mistake which is not harmful to the humanity or not to the environment may be penalized in an amount but not be imprisoned as it used to be in the earlier matters, sir, till today. So, but one concern from my side is that, सर, एक बहुत अच्छी कहावत बचपन से हमने सुना था, पढ़ा भी था, और ऑनरेबल मिनिस्टर को तो ज़्यादा पता होगा, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. जब जो पेनल्टी लगाते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल रहेंगे, जो सबसे मिनिमम क्वालिफिकेशन उनका होगा, जॉइंट सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट कैटेगरी से नीचे ना हो, सर, वो फैसला करेंगे कि कौन सा जुर्म पेनलाइज कितना किया जाएगा. और अगर उनसे कोई अग्रीव्ड है जिनको पेनलाइज किया गया है, तो वो एनजीटी को अप्रोच करे. बट एट द सेम टाइम, सर, आप जो चाहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, केसेस पेंडिंग ना रहे, पर यहाँ पर कोई टाइम बाइंडिंग नहीं है ऐसे केसेस पे जिसमें कोई एक निर्दोष को अगर दोषी ठहराया जाता है या दंडित किया जाता है, वो किस वक्त फ्रेम के अंदर वो न्याय पाएगा एनजीटी अगर जाता है. सो काइंडली लुक इनटू दिस मैटर ऑल्सो. देयर हैज टू बी अ टाइम फ्रेम टू दिस. एंड सो व्हाइल reconsidering penalties is important, another point is that penalties must not become an excuse to pollute. Ki, sir, these amendments mean that pollute and pay principle that has effectively become pay and pollute principle. And that is why it is important that imprisonment must be a possibility, at least for extreme and very, very extreme crimes, sir, or mistakes. What do you say? Sharing of data and coordination between bodies responsible for addressing groundwater pollution, such as state government departments, pollution control boards and agencies, such as CGWA, must be encouraged, sir. Yes. While finishing my speech, sir, I would just like to point out one or two things. Sir, we, at the same time, while we are talking on prevention of pollution or checking pollution of water and environment, we must also talk about saving water. In 75 वर्षों में
जो आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, माननीय मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, उन्होंने घोषणा किया था अमृत सरोवर का, जो if I am not wrong, as I got to know through the speech of Honorable Minister in the Rajya Sabha in the other house, that he is very happy that the target has been achieved by the Government of India. I would like to know what is the target. It will be very clear if, it will be very good if Honorable Minister give a clarification on this, a data on this. And at the same time, sir, yes, sir, I'm closing, sir. Yes. Sir, we humans, कितने भी ऐसे laws आ जाएं, सर, कितने भी ऐसे amendments क्यों ना आ जाएं, unless and until we are aware and we are not committed to ourselves, कि हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम इस पर भी चेक करें, कैसे पोल्यूशन को कम करें और कैसे हम पेनलाइज ना हो, कोई गलती हमसे ना हो, इस पर अगर हम भी सोचें, क्योंकि हम वी ऑल आर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, elected representatives, so through us and through all of us, on behalf of all of us, I would like to convey a message to the nation in overall that we all also must support the government in such an act, and if such amendments are coming, which is for the betterment of the society and for the environment, then we also must give a collective effort from our end by checking pollution and by checking crime, sir. Thank you so much. Jai Hind, Vande Mataram. Thank you. Honourable Member Sri Ram Shiromani Verma. Makes an impression. धन्यवाद सभापति महोदय। आज जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण संशोधन बिल 2024 पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। जैसा कि विदित है कि यह जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण संशोधन बिल 2024 5 फरवरी 2024 राज्यसभा में पेश किया गया था और 6 फरवरी 2024 को पास हुआ था। इस बिल का मुख्य उद्देश्य सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और संघ क्षेत्र में जल प्रदूषण को रोकने के लिए पहले से बने कानून को और सशक्त बनाकर पूरे देश में बढ़ रहे जल प्रदूषण को नियंत्रित करना है। यदि कोई व्यक्ति जल प्रदूषण करता है तो पहले 1.5 वर्ष जेल और फाइन दोनों से सज़ा दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में इस बिल का मकसद जेल की सज़ा को हटाकर उसके स्थान पर आर्थिक दंड 10,000 से लेकर 15 लाख रुपए तक लगाने का प्रावधान है। मेरा मानना है कि जल प्रदूषण 2 प्रकार से होता है, एक तो मानवीय और दूसरा प्राकृतिक। मेरा संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती जो तराई क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसके अलावा जनपद, ये पिछड़े जनपद हैं, जनपद श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर तथा अन्य जनपद भी आते हैं, जिसमें हमारे यहाँ राप्ती नदी का पानी जब उसमें बाढ़ आता है तो इतनी गंभीर समस्या पैदा कर देता है, जैसे कि किसानों की फसलों का नुकसान होना, साथ साथ इतनी भयंकर बाढ़ आती है कि तमाम जो किसानों के जानवर, जीव जंतु, तमाम ऐसे जानवरों की मृत्यु हो जाती है और उससे भी भयंकर प्रदूषण उस नदी के अंदर हो जाता है। ऐसे तमाम पूरे प्रदेश में इस स्थिति को देखते हुए मैं माननीय मंत्री जी से चाहूँगा, सरकार से चाहूँगा कि इसी भयंकर स्थिति से निपटने के लिए जो मेरा क्षेत्र है, जो पिछड़ा जनपद है, उस नदी राप्ती नदी के दोनों किनारों पर ऊंचे बांध बना करके और पानी को रोकने का प्रयास किया जाएगा तो हमें लगता है कि हर साल जो बाढ़ आती है कई हजार घर नदी में समा जाते हैं और किसानों के जानवर भी काफ़ी संख्या में उनकी मृत्यु हो जाती है। मैं खुद गया था, अभी 2021 में बाढ़ आई थी सभापति महोदय, मैंने देखा था कि गाँव के तमाम जानवर नदी में बह गए थे। तो ऐसी स्थिति में जो सरकार की मंशा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ कि ऐसे जो जल प्रदूषण है अगर उसको रोकना है तो मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण बिल है
और इस बिल का मैं समर्थन करता हूं, मेरी पार्टी समर्थन करती है। और जिस तरीके से तमाम जो हमारा क्षेत्र भी है वहाँ इतना प्रदूषण है, उस प्रदूषण को रोकने का काम अगर किया जाता है तो जिससे नदी का पानी दोनों किनारों पर जो बांध हमने बात की है वो बांध बनाए जाएं, जिससे फैले हुए ही जल जनित रोगों की वृद्धि ना हो सके। और इसी के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और अपनी वाणी पर विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Honourable Member Supriya Sule. Thank you, sir. I choose to